Pragati is at the Khar police station where the accused has been kept in detention. Pragati, if you can hear me, I'm coming to you right now. Take our viewers through what is happening. Interrogation is on. We know at least 4 police officers are interrogating this accused, and we are also getting information that this accused is changing statements and doing U-turns. Yes, go ahead, Pragati. What is happening on the ground? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, सोर्स बता रहे हैं कि 4 अधिकारी अक्यूज से पूछताछ कर रहे हैं, इस आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। वो आरोपी जिसका नाम मोहम्मद बताया जा रहा है और ये लगातार अपने नाम भी बदल रहा था। जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट में यू टर्न लेता दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट लगातार बदलता जा रहा है। हालांकि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन गुनाह कैसे किया था, वो कैसे पहुंचा था, सीढ़ियों से नीचे कैसे उतरा, उसे कैसे घर के बारे में जानकारी थी, उसे कैसे पता था कहां जाना है, कहां से वापस आना है, इजीली वो अंदर कैसे घुसा, कैसे इन्वेड किया, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा क्या चोरी मकसद था, इन सभी मामलों पर, इन सभी मामलों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। 4 अधिकारी जो फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मोहम्मद इलियास लगातार अपनी जो स्टेटमेंट है उससे यू टर्न ले रहा है, अपने स्टेटमेंट को बदल रहा है, लेकिन पुलिस भी कड़ाई से पूछताछ कर रही है और फिलहाल जानने की कोशिश कर रही है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। इतना ही नहीं, ये जो व्यक्ति है, ये जो युवक है, वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है, जो यहाँ पर आया था, बार में हाउसकीपिंग का काम करता था और लेबर कैंपिंग एरिया से इसको बरामद किया गया, इसको पकड़ लिया गया, जहां पर बुशेस के पीछे, झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, जहां से इसे पुलिस ने पकड़ लिया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जो लोग वहां पर रहने वाले हैं वो भी बता रहे हैं कि ये बंगाल का रहने वाला है। इसने अपना नाम विजय बताया था, विजय दास बताया था। इसके अलावा मोहम्मद इलियास लगातार ही अपना नाम बदल रहा था, फिर हेडफोन लेने पहुंचता है, मोबाइल की शॉप पर पहुंचता है, वो जो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस आ रहे थे, थाने में जाकर छुप जाता है, थाने में ही काम करता था। तो आखिर उसने इतनी बड़े हमले को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे क्या वजह है, ये अभी पूरी तरीके से खुलकर नहीं सामने आ पाया है, लेकिन पूरी मुंबई नगरी, पूरा देश दंग है। Yes. आखिर Pragati, I'll come back to you. Pragati. Pragati is my colleague. Pragati, who was just speaking there, is at the Khar police station where the accused has been kept in detention. Interrogation is on. Meenakshi, I'm coming back to you. Meenakshi is at the construction site from where the accused was picked up by the police. Yes, Meenakshi, you were speaking to the workers there and they were telling you that the police questioned the workers, specifically those workers who have come from West Bengal. Yes, Meenakshi, go ahead. Yes. As I told that police came here and at 7 o'clock yesterday evening, and they came here and they searched all that. I will show you visuals here. All that labor compound, those labor are staying here, their room, and police said those who are from Bengal, I repeat, exclusive information only on Republic TV, we are giving that that accused could be from Bengal, West Bengal, because the police came here and police said those who are from West Bengal come fast and come in front of us, and they are asking so many questions. Those laborers, those who are from Bengal, and police came here at this location, at this very location, police came here and asking so many questions. Those who are come from Bengal, and these quarters, labor quarters are here. They are those who are come from Bengal. They staying here. These quarters. I am showing you exclusive visuals. Only on Republic TV, we are showing that police that accused could be from West Bengal. Laborers are saying कि हम लोगों को यहाँ पे आके बोला कि पहले जो बंगाल से है वो सामने आ जाओ. So they are scared. Those who are from Bengal, they are scared and they came in front, and police asked so many questions and checked their mobile also. And I am showing you again that place where that accused found from. This is the location. It's Hiranandani Estate Thane, and this is the location where
labor staying here, those are 9 to 10 labor quarters are here. This is the location where that person police found difficulty in catching the accused after he hid in the bushes and had to rely on torch and mobile flashlight. Police used torch and mobile flashlight. See the location, see the jungles here, is a little bit forest here, and that person, that accused, hide himself here. Surrounded the bushes from all sides, that police found difficulties to their search operation. The accused had received information about the police team's arrival and hiding in this dense thorny bush at the construction site. This is construction site. We are showing you visuals. See, this is construction site, Hiranandani, and the accused hide himself here. And he could be from West Bengal. Police is asking so many questions now. Here we are getting information. Police left this place at 4 a.m. morning. So after arrest him, police were asking so many questions. Those who are from West Bengal, only Republic are getting information, and we are showing you the exclusive visuals. Back to studio.